से उर्दू से सौतेले सलूक का सिलसिला लगातार जारी है। अब ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश हज कमेटी से जुड़ा है। अब उत्तर प्रदेश हज कमेटी के गेट पर लगे बोर्ड से उर्दू गायब है। इसको लेकर अहले उर्दू में मायूसी देखी जा रही है। इस सिलसिले में मुजाहिद उर्दू अब्दुल नसीर नासिर ने तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सारुल्ला बांग्ला टीम इज एक्टिव इन आसाम और आमी एक पार्टिकुलर पर्सन जनक आमी अरेस्ट करिब पारिछु, किछुक आमी अरेस्ट करिब परा नाइ, बट मेन किंग पॉइंट ऑफ द एंटायर ग्रुप्स आर few Bangladeshi nationals which are still some is in our radar, some is not in our radar, but yes, the kingpin of basic indoctrination started from this core team which has come from Bangladesh. So we arrested Muhammad Suman, Badsha Sulaiman Khan, Muhammad Naused Ali, Khairul Islam, Taimur Rahman Khan, Mamunur Rashid. ইয়াৰ ভিতৰত মোহাম্মদ জি সুমন তেওঁৰ কেবাটাও এলায়েন্স আছে, এলায়েন্স শফিউল ইসলাম, হাৰুন ৰছিদ, ৰেচিডেণ্ট অফ ভিলেজ আপাদি, PS আড়াই হাজার, ডিস্ট্রিক্ট নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ. He was leading the module, primary module. The prime accused Suman entered India illegally from Bangladesh via West Bengal, finally settled in Borpeta in 2018, seeking safe haven and was living in the guise of an Arabic teacher in Saikhul Hind Muhammadul Hassan Jamul Huda Islamic Academy of Jusi Hatipara, Borpeta. Also, he was working as an imam in Dhakalipara Masjid, Hauli, Borpeta. So, দুটা বস্তু ইমার্জ হয় বাংলাদেশৰ পৰা আহিলে. He illegally entered into Assam 2018. He is not a citizen of India. He entered Assam আৰু এই মডিউলটো চলাবৰ কাৰণে তেওঁ আৰবিক টিচিং স্কুল এখনত বা সো কল মাদ্ৰাসা হওক তাতে তেওঁ নিজক টিচাৰ হিচাপে সোমাই ললে আৰু তেওঁ সাইমালটেনিয়াছলি তেওঁ ইমাম হল. Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing gullible youths to join the outfit. Jihadi literature Bismillah Hi Allah Alhu in Arabic was seized in this case connection. So we have seized when Sumanok ami arrest koru, এই গোটেই ডকুমেন্টস বিলাক আমি তেওঁৰ পৰা সিজ কৰো. Muhammad Suman was indoctrinating terror ideology among Muslim youths with a view to recruiting them in prescribed jihadi outfit and work as a answers to create a base for Al-Qaeda and furtherance of jihadi activities. It may be mentioned that ABT আপোনালোকে খুদিব পাৰে যে বাংলাদেশৰ পৰা কিয় আহিলে, বাংলাদেশ চৰকাৰে কি কৰিছে. ABT is already banned in Bangladesh and Bangladesh government has already declared ABT as a unlawful organization. However, this case was that subsequently ami Assam police ei case to NIA leke diu. Now it is under investigation by under NIA for unearthing the larger conspiracy. Kan jeta Indiar bahirot footprint poa jay, eta samoyor pisot Assam police hand over that case.